Okay, so like now we are going to discuss about this dissipation of function of phi v for Newtonian fluids. So basically, this comes from the fluid mechanics, and it tells us like how mechanical energy from flow is lost due to viscosity and internal friction of the fluid. So the equation generally goes as phi v is equal to 2 into dou vx upon dou x whole square plus dou vy upon dou y whole square plus dou vz upon dou z whole square plus dou vy upon dou x plus dou vx upon dou y square plus dou vz upon dou y dou vz upon dou y plus dou vy upon dou z whole square plus dou vx upon dou z plus dou vz upon dou x square minus 2 by 3 dou vx upon dou x plus dou vy upon dou y plus dou vz upon dou z whole square. So basically here the Vr, that is the velocity in the radial direction, is outward from the center, and the v theta or v theta is the velocity in polar or collatitude direction from north pole, and v phi is the velocity in the direction of like from the axis. Actually it is around the axis and longitudinal. So terms inside the phi v represent is something squared gradients of each velocity component, like dou v into r upon dou r. The cross terms between the components, like dou v r upon dou theta and dou v theta upon dou r. Okay, the final subtractive term from this the subtractive term removes isotropic, that is uniform parts. It helps to focus on real and viscous dissipation, not simple expansion but compression. And the second equation here is, okay, let me just remove that. Okay, the second energy equation in spherical coordinates is this, like r, theta and phi. So this tells us how temperature changes in flowing fluid due to conduction, pressure work and viscous dissipation. So here wait a minute. Okay, so sorry. Okay, so this basically works on the Newtonian fluids, and this one, which is the equation of energy in the terms of Q. So this basically, okay, so now we are going to look at the picture, or look at the thing of how the equation of energy, the term of energy equation in terms of Q. Alright, sorry. Okay, in terms of Q. So this is the generalized equation of P, C cap P dt upon dt is equal to minus del into Q minus dou ln P upon dou ln T into P dP by dt minus tau. Okay, so now we are going to look at the equation of energy in terms of Q, which goes as rho C cap P dt by dt is equal to minus del into Q minus dou ln rho upon dou ln T into P into dP by dt minus tau into del V. So what does this actually means? This tells us how temperature T changes in a flowing fluid due to conduction, pressure, work, and viscous dissipation. So basically this terms, especially in spherical coordinate, that is r, theta and phi, which goes as rho C cap P into dou T upon dou T plus Vr into dou T upon dou R plus V theta by R into dou T by dou theta plus V phi upon R sin theta minus dou T upon dou phi. That equals to 1 upon R square dou by dou R square QR plus 1 upon R sin theta into dou by dou theta Q theta sin theta plus 1 by R sin theta dou Q phi upon dou phi minus dou ln rho upon dou ln T
into dp upon dt minus tau into del v. So here the rho is the fluid viscosity, the c cap p is specific heat of the constant pressure, and qr, q theta and q phi basically is the heat fluxes in r, theta and phi ranges, and dp by dt is the rate change pressure, is the rate of pressure change actually, and tau into del v is the viscous dissipation. So here the LHS in the energy accumulation, and right hand includes basically all the terms in the left. LHS are in energy accumulation, and the RHS basically shows variation. That is, the RHS shows as heat conduction, pressure energy conservation, and energy change or energy loss due to viscosity. Okay. हेलो। नाउ हम अब इस लेक्चर के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं सम कांस्टेंट्स एंड द कन्वर्जन फैक्टर। अभी तक आपने अपेंडिक्स ए एंड अपेंडिक्स बी में वेक्टर्स, टेंसर्स एंड अदर्स नोटेशंस, along with that spherical, some cylindrical and Cartesian coordinates in all three formats for the molecular mass and the heat फ्लक्स एंड द वेलोसिटी प्रोफाइल, कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल, सारे तरीके के इक्वेशंस हमने अभी तक के देख लिए, सारे तरीके के डेरिवेशंस भी अभी तक हो चुके हैं। नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि है हमारे पास, दैट इज द कांस्टेंट्स एंड द कन्वर्जन फैक्टर्स। ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले मैथमेटिकल कांस्टेंट्स, फिजिकल कांस्टेंट्स एंड द कन्वर्जन फैक्टर्स। ठीक है, इस सेशन में एक्चुअली हम कम से कम समय में जो सारी चीजें वो यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, सो फोकस। या सी फिजिकल कांस्टेंट्स में यहाँ पे हम देख रहे हैं गैस कांस्टेंट्स, दैट इज आर, जो कि सी दिस काइंड्स ऑफ कांस्टेंट्स जो है वो हमारे एग्जाम्स में कंटिन्यूअसली मींस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं, जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम वहां पर यूनिट्स के जरिए या फिर यूनिट्स की वजह से, जिस यूनिट्स में हमें पूछा गया है प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस यूनिट में है, पूछा किस यूनिट में है, बाकी डाटा किस यूनिट में दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग कैसे होता है कि हम वहां पर मिस्टेक्स करने के बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं। दैट्स व्हाई मैथमेटिकल इन ट्रांसफर फिनोमेना में हम ये कॉन्सेप्ट्स, हम ये चैप्टर, हम ये पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो सी दिस द गैस लॉ कांस्टेंट R is given as 8.314 in joule per gram mole Kelvin. Then at 10 to the power 3 it's become in the kg meter square per second square kg mole Kelvin. ठीक है, ये सारे यूनिट्स है फॉर द R itself। ठीक है, R के लिए ये यूनिट्स है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन स्टैंडर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसमें भी हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स फीट्स में या पाउंड्स में जब हम ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स में यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम 32 यूज करते हैं। सी जूल कांस्टेंट्स, ठीक है, जूल पर कैलोरी में क्या होता है, अर्थ पर कैलोरी में क्या होता है, फीट पाउंड्स पर ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स में क्या होता है। देन द एवोगाड्रोस नंबर, एवरीवन नोज अबाउट इट। Then the Boltzmann constant K, that is simply 1.3 into 10 to the power 23 joule per Kelvin. See, along with that Faraday's constant, Planck's constant H, जो कि या प्लैंक कांस्टेंट जो है वो हमारे सेगमेंट में कंटिन्यूअसली यूज होता है। ठीक है, सो इसे हमें भूलना बिल्कुल भी नहीं है। एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये होता है कि मींस आ जाएगा हमें क्वेश्चन, आ जाएगा हमें कंसेप्ट आता है, क्वेश्चन आता है, सॉल्व भी करते आता है, बट जब एग्जाम में क्वेश्चंस में यूनिट्स डिफरेंट पूछे जाएंगे, देन यू विल गेट कंफ्यूज कि यार इस यूनिट में हमें पूछा गया है तो हाउ वी कैन फाइंड इट, राइट। सो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस नाउ। कन्वर्जन फैक्टर्स, ठीक है, कन्वर्जन फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। फिजिकल इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हमने देख लिया, जिनके यूनिट्स हमने देख लिए। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइम्स हमें आर की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट।
या सो कन्वर्जन फैक्टर्स सी कन्वर्जन फैक्टर्स में हमारे पास है गिवन अ क्वांटिटी इन दिस यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय दिस यूनिट्स देन टू गेट द क्वांटिटी इन दिस यूनिट्स। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है यहाँ पर पाउंड्स है, किलोग्राम्स है। ठीक है, यहाँ पर व्हेन मल्टीप्लाई बाय दिस यू विल गेट द क्वांटिटी इन द ग्राम्स। सी हमारे पास अगर पाउंड्स में गिवन है, अगर हमें उसे ग्राम में अगर कन्वर्ट करना है तो हम इस पाउंड्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 453.59 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द आंसर इन द ग्राम्स। ठीक है, इन अ सिमिलर वे किलोग्राम्स को पाउंड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंचेस को सेंटीमीटर में, देन द गैलन्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेट्रोलियम रिफाइनरीज में गैलन्स की टर्म्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज की जाती है। ठीक है, गैलन्स, बैरल्स, ठीक है, एंड मेनी सच मोस्ट क्यूबिक, स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट। ठीक है, सो इस तरीके की क्वेश्चंस की यूनिट्स को हैंडल करने के लिए आपको इस सेगमेंट को अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए। देन क्यूबिक फीट, केल्विन्स, डिग्री एंड followed by the degree ranking and the liters cubic feet। ठीक है, also there are the certain given a quantities in this unit। ठीक है, ये सेगमेंट भी इंपॉर्टेंट है जो कि कंप्लीटली हमारे जो बुक है दैट वी सी इज द भगवत गीता लाइक काइंड ऑफ बुक फॉर आवर ट्रांसपोर्ट फिनोमेना बीएसएल। ओके, हम उसे गीता की तरफ बोल सकते हैं कि जिसमें सारे, जैसे गीता में सारे तरह का नॉलेज है, इन द सेम वे बीएसएल में सारे ट्रांसपोर्ट फिनोमेना का नॉलेज है, होल ऑफ द थिंग्स। ठीक है, आपको सारी चीजें वहां पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो वहां से हमने इस पॉइंट्स को एक्चुअली हाईलाइट किया हुआ है। सी this is a given quantity in this unit, this Newton kg meter per second square multiplied by this to convert in this unit। यहाँ पे units conversions given है, newtons then dynes and the pounds। ठीक है, इसमें कैसे कन्वर्ट करें, राइट। नाउ द नोटेशंस, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। ओके, नोटेशंस में हमारे पास क्या है, इन ट्रांसपोर्ट फिनोमेनन जैसे हम नोटेशंस की बारी जब आती है तब चीजें इस तरीके से हो जाती है कि आप अगर कुछ अलग सोर्सेस से अगर ट्रांसपोर्ट फिनोमेना पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपको अलग नोटेशंस गिवन होंगे, किसी अलग बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको अलग नोटेशंस गिवन होंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स एज जो वाइडली एक्सेप्टेड काइंड ऑफ थिंग्स है वो मैंने यहाँ पर कवर किए, दैट्स कंप्लीटली फ्रॉम द बुक बीएसएल वी नो। ठीक है, सो एरिया, दिस absorptivity defined by the A, the heat capacity for constant volumes, the speed of the light, diameter of the cylinders, then the binary diffusivity of a system, then the Maxwell-Stephan multi-component diffusivities, these are the diffusivities। ठीक है, then the compression terms and the mechanical terms, simply the combined energy flux vector, all these things are covered here, right। Yeah, followed by this kinetic energies। ठीक है, two phase mass transfer coefficients, what is this, then along with that the mass transfer coefficient for mass transfer rates and small species concentration, mass transfer coefficient for the higher net mass transfer rates, thermal diffusion ratios, electrical conductivities per ohm per centimeter, then the homogeneous chemical reaction rates, total angular momentums, mixing length, characteristic length। हाँ, या कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो है वो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये हमारे वेरियस क्वेश्चंस वेरियस सेगमेंट्स में यूज होती है। ठीक है, देन द मोलर मीन मॉलिक्यूलर वेट्स एंड द मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ स्पीसीज, दीज आर द थिंग्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट, राइट। until we discuss most of the times we use among this the physical quantities जो हमने प्रीवियस हमारे वीडियो में यूज की है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग आपको यूनिट्स का वहां पे नॉलेज होना, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, नाउ द यू कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इंटरनल एनर्जी काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, सी दिस इज द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ठीक है, देन द वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, द मास रेट्स ऑफ द स्पीसीज, देन द मोलर फ्रैक्शन एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है,
इसी तरीके से हमने सारा जो हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स है इन ट्रांसपोर्ट फिनोमेना हमने कवर कर लिए, ठीक है, जिसमें हमने सारी चीजें कवर की है फ्रॉम द स्टार्टिंग, दैट इज अपेंडिक्स ए फॉलोड बाय अपेंडिक्स बी, देन द इंपॉर्टेंट फिजिकल नोटेशंस, द कन्वर्जन फैक्टर्स, ठीक है, एंड द इंपॉर्टेंट कांस्टेंट्स, उनके यूनिट्स, उनके डायमेंशंस, एवरीथिंग इज कवर्ड। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। along with that, if you have any doubts in any of the point, किसी भी point में, किसी भी topic में अगर आपको doubts है, comment below in the section, I will reply or my batchmates will be definitely reply to it. If you like this video, please share with your friends. Also subscribe to my channel. Thanks for watching. Thank you.